चले, सो आई रिक्वेस्टेड कि आप एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट को देख लें इफ पॉसिबल, and then second part we can see if you have done it or not. So any thoughts anyone wants to share, जो भी आप लोगों को समझ आया है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं. सही। जो हमने किया है वल्लाहु यालमु इन्नका अला रसूलहू को, कि वल्लाहु इज ए। वल्लाहु इज ए. मैं शेयर कर दूं स्क्रीन पर भाई? आप स्कैन कर लें, आप शेयर कर लें, बिल्कुल. मेरी स्क्रीन शेयर है जी जुनेद, वी कैन सी. सही है। हाँ, हमने इसको जुनेद भाई जबरदस्त। सॉरी, जूम करूं? जी जी बिल्कुल, वी कैन सी दैट. अच्छा, हमने इसको किया है वल्लाहु को ए, यालमु जो है वो नेक्स्ट जुमला फेल लिया, हम्म. उसको हमने 1 2, और इन्नका अला रसूलहू को फिर जुमला इस्मिया। यालमु का जो इन्नका अला रसूलहू द होल पैकेट, उसको हमने मफूल फी महल नसब, और फिर वल्लाहु का खबर फी महल रफा करके इसको बी किया। जबरदस्त, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, वेल डन. ट्रांसलेशन क्या बनाई है वो भी देख लेते हैं. ट्रांसलेशन जो हमने किया वो है एंड अल्लाह ही नोज इंडीड यू आर श्योरली हिज रसूल। अभी छा गए आप लोग माशाल्लाह, जबरदस्त. इसमें सॉरी फाद भाई, ये जो जी वल्लाहु का जी जी. ए के सॉरी दोबारा जरा थोड़ा सा बताएंगे क्या रूल्स है ए होने के लिए? देखिए, मुब्तदा आइडेंटिफाई करने के रूल्स हमने पढ़े थे व्हेन वी डिड फाइंडिंग एन इनविजिबल इज. उस वक्त आपको पता नहीं था आप इज क्यों फाइंड कर रहे हैं, राइट? सो मुब्तदा इज ऑलवेज रफा, and in 95% of time it's proper. ठीक है? सही। And in just one case it can be harf of nasab. ठीक है? तो whenever you see a proper ism followed by a common ism or something that does not connect as a chain, break in the chain, you will find mubtada. When you see a pointer, when you see a pronoun, you will find mubtada. When you see a harf of nasab, that is your mubtada. ठीक है? वो 5-6 रूल्स जो थे जिससे आपको इज मिलता था, जैसे ही आपको इज मिलता है, द राइट साइड ऑफ द इज योर मुब्तदा, द लेफ्ट साइड ऑफ योर इज द रिमेनिंग सेंटेंस, व्हाटएवर दैट स्ट्रक्चर इज. ठीक है? सिर्फ एक केस ऐसा था कि जब मुब्तदा वाज कॉमन, व्हेन मुब्तदा वाज कॉमन इट वाज सपोज्ड टू बी मुअख्खर, डिलेड. ठीक है? दैट्स व्हाट वी डिड. आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था इसको? जी, लेकिन हम शुरू में सिर्फ वल्लाहु पे थोड़ा सा इसको एक करने में रिलक्टेंट थे, बट काइंड ऑफ हमने इसको ए किया, लेकिन हमें जी. समझ नहीं आ रही थी कि रीजंस क्या है इसको ए करने के। जी इसमें एज अ स्टूडेंट अगर आप जिस जिस पॉइंट पे भी आप हैं उस पे आप ऐसे सोचेंगे, आप कहेंगे द वर्ड अल्लाहु इज प्रॉपर एंड द नेक्स्ट वर्ड इज यालमु. Certainly यालमु is a fail, so there is no link between the two. I cannot say it's proper followed by common. I cannot say that because common तो सिर्फ इसम होते हैं, fail तो नहीं होते, right? Then I cannot say the word Allah is a pointer or a pronoun or a harf of nasab. The only thing I'm left with is the break in the chain. There is no relationship that I can see between the two words. So because of break in the chain, I will mark the word Allah as mubtada. जब भी फेल आता है ना किसी जुमला इस्मिया में, जब भी फेल आता है जुमला इस्मिया के अंदर, देखें इज जो होता है ना, इज ऑल्सो अ वर्ब, इट्स अ वर्ब टू बी. ठीक है? इन इंग्लिश when you bring another verb, two verbs cannot come together in an English sentence, right? So whenever a fail is introduced, it actually replaces the is. आप इसको यूं समझ लीजिए. अब ये यालमु जो आया है, आप ये नहीं कहेंगे अल्लाह is, he knows. You will not say that.
you'll say Allah, He knows. Because अब is की कहानी खत्म हो गई because is replaced by another fail. Right? जब सबसे फंडामेंटल जुमला इस्मिया होता है उसके अंदर is होता है. ठीक है, क्लियर है? आई एम ग्लैड कि आप जी लोगों ने इसको अचीव कर लिया. बाकी सब आपका भी सोल्यूशन यही था. जी जी चलिए, जबरदस्त. थैंक यू जुनैद, जबरदस्त, वंडरफुल. ठीक हो गया. अगर आपने वो कर लिया है तो आप ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह. राइट? जी It's not too challenging. Let's quickly do that as well. It's a similar structure. ठीक है? जी वल्लाहु is a The word Allahu is A. yashhadu is 1 2 Yashhadu is 1 and 2. यशहदु is he testified, he testifies. राइट? यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम स्ट्रक्चर समझेंगे, हम वोकैबुलरी को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे. राइट? सो ही टेस्टिफाइड. indeed एंड देन harf of इन्नल मुनाफिकीना हमने टैग किया था ए. a innal munafiqina is and again A because it's a harf of nasab fragment. ठीक है? Inna is a harf of nasab and al munafiqina is the ism in nasab. Right? मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, मुनाफिकीना. ठीक है, क्लियर है? यहाँ जुनैद आपकी साइड पे भी सब? जी जी ओके. देन लकाजिबून. b ला इज एम्फसिस एंड काज़िबूना इज बी खबर. जबरदस्त. बी. ठीक है, ठीक है. एनी रिलेशनशिप बिटवीन यशहदु एंड इन्नल मुनाफिकीना लकाजिबून? जी whole ये bucket पूरा होल बकेट. जी, दिस एंटायर बकेट Is is your, fi mahalli जी, this is going to be your fi mahalli, fi नसब. mahalli nasab, maf'ul. ठीक है, this entire thing. ठीक, and then you go down this entire thing, all of that, this part is going to be your khabar. yes ठीक है, खबर fi mahalli rafa. rafa ठीक. So the word, तो आप यहाँ पे तकरीबन 3 sentences को देख रहे हैं in a nested structure. ठीक. And Allah, मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से. ठीक है. And Allah, He knows indeed you are truly His messenger. ठीक है. And Allah, he testifies हेल्प कर दे मेरी. he He testifies testifies indeed indeed they are The the, the ये तो है ही नहीं. मुनाफिकीना अब मैंने उसको प्लूरल सॉरी नहीं सॉरी जी. indeed Indeed the the hypocrites are truly truly liars surely liars. ठीक. That's your first ayah. अफाद भाई सॉरी इसका एक जी. क्वेश्चन है जी. कि जो ये लकाज़िबून है जी. ये इसको रफा होना चाहिए ना? खबर को रफा तो खबर ये रफा ही है ना, मुस्लिमूना. ओह सही, ठीक है जी, राइट? जी सही है. ठीक है, क्लियर? yeah माशाल्लाह, वेरी गुड, गुड प्रोग्रेस. um इत्तखज़ू अयमानहुम. आई थिंक इंशाल्लाह इस पॉइंट के बाद कुछ चीजें आपके लिए अब आसान हो जानी चाहिए. जब कोई कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आई विल टेल यू.
अच्छा तरीका ये होता है कि अब जैसे ये फर्स्ट आया आपने कर ली ना, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिटेन इट एंड मेमोराइज इट। ठीक है, इंशाल्लाह ट्राई ट्राई योर बेस्ट। अगर रमजान से पहले आप इस सूरा को थोड़ा सा कर ले मेमोराइज, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। लेट्स ट्राई इट। इत्तखज़ू, क्या ख्याल है आप लोगों का? व्हाट टाइप ऑफ वर्ड? fail. फेल। Fail. What type of fail? कमांड। नो, Okay. मैं तो अलिफ की वजह से कह रही थी कि शायद कमांड है इसमें। Okay. Then let's take all the opinions. हम फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक एक ओपिनियन आ गया कि दिस कैन बी पोटेंशियली अ कमांड बिकॉज वी सी एन अलिफ। ठीक है, Home is the Home pronoun. pronoun प्रोनाउन इसके अंदर होम है। ठीक है, और कोई ओपिनियन? इज इट अ पास्ट और अ प्रेजेंट? past. पास्ट। अब एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, कमांड और पास्ट, कैन इट हैपन टुगेदर? सो इट्स वन ऑफ द टू, राइट? इट्स आइदर कमांड और पास्ट। अंती के से जो स्टार्ट होते हैं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फिट नहीं। तो ये इत्तखज़ू। इसको वो केस होगा जिसमें हम इसको फ्यूचर कंसिडर करेंगे। नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो कुछ इजा नहीं है, राइट? पीछे इजा भी नहीं है इसके पीछे। दिस इज अ पास्ट टेंस। ठीक है, कमांड नहीं है। कमांड। the fail is like this. اتخذ اتخذ, this is a fail। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन कमांड के साथ क्योंकि अलिफ लगा हुआ नजर आया। ये एक पैटर्न होता है इस तरह का। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू अ क्लियरर फेल, इक्तरबा, इक्तरबा। नाउ हम कभी सर्फ पढ़ेंगे आगे तो हम इन चीजों को पढ़ेंगे। सो इमेजिन कीजिए दिस रूट लेटर काफ इज आल्सो ता। सो व्हेन दिस रूट लेटर बिकम्स ता, व्हाट हैपेंस? अब मैं इसके रूट लेटर्स उठा के आपको ये कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूं। इथ, now this ta is part of the template, you can't remove it। okay, then you have another ta, it, and then ta, the second ta, and then you have khaza। That's how the originally fail was। अब आप एक ताराबा का रिटन पैटर्न देख लें और एक इत्तखज़ा को देख लें, इट फॉलोज द सेम स्ट्रक्चर एज अ वर्ड, जिसमें ये जो मिडिल ता है, दिस ता and this ta is not part of a root letter and it comes as a template in Arabic। हम ये बाद में पढ़ेंगे ये चीजें। ठीक है, ये अलिफ, this is also part of the template। yeah? This all part of the template। The real root letters are ta, ha and za, zal। ठीक है, इसमें है काफ, रा एंड बा। Everything else is extra, it's coming from the template। So when things like this happen, Arabs don't like to write it like this। They smush them together into ta and they put a fatha on it, the haraka of the template ta। So it becomes ittakhaza। और जो जो क्योंकि ये कमांड हमें इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे अलिफ था, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल क्योंकि जाहिर है जब कमांड बनती है तो नॉर्मल होता है। लेकिन अलिफ लग सकता है, लेकिन इसका जो प्रेजेंट टेंस है वो है यत्तखिजु। यत्तखिजु। आई एम जस्ट गिविंग दिस टू यू, बट आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। आई एम जस्ट टेलिंग यू वेयर द वर्ड कम्स फ्रॉम। ठीक है, यत्तखिजु, एंड इसको आप सेकंड पर्सन बनाते हैं तत्तखिजु। ताट। आप उसको लाइटेस्ट बनाते हैं तत्तखिज।
right? And you remove the ta, right? Takhiz. ठीक? Command. जी। अब इसमें अब आप इसको पढ़ नहीं सकते आप, right? You give a helper alif, ठीक? And then you will have a kasra on it because the second last root letter is the kasra. So ittakhiz. अब 6 commands आप बनाएंगे, ittakhiz, ittakhiza, ittakhizu, ittakhizu. This third command जो बनेगी आपकी, वो बनेगी ittakhiz, ittakhiza. मैं वो subtle difference आपको बताना चाह रहा हूँ. Ittakhiza, this is the second command, and then the third command is ittakhizu. So अब आप मुझे बताइए डिफरेंस कहाँ है इस वर्ड के अंदर खा और में इस वर्ड के अंदर, खा का फतह और कसरा, फतहा और कसरा, and that's the only difference, right? Now this one is command and that one is a past tense, right? Subtle difference. और ये चीज इंशाल्लाह उस वक्त पता आपको समझ आएगी जब आप इंशाल्लाह ये पैटर्न्स पढ़ लेंगे तो आसान हो जाएंगी ये चीजें. तो अभी मैं आपको इस तरह हेल्प आउट कर लिया करूंगा, ठीक है? सो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल कि अगर आप कमांड पे कंफ्यूज हुए हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट हैपेंस, ठीक है? सो दिस वर्ड मींस टू टेक. मैं आपको जनरल मीनिंग बताऊंगा. टू टेक, टू टेक. Now we have established that this is a past tense and it is whom. So we have established that this has 1 and 2 here. Okay? And this word means to take. Okay? So this is the start of what type of jumla? फेलिया, Fa'iliya. So when it starts with jumla fa'iliya, what should I expect? Which components can I expect? मफूल मफूल. मफूल expect कर सकता हूँ, मुतालिक बिल फ़िल expect कर सकता हूँ, right? So let's go ahead and find what we have. ईमानहुम, ईमान ईमाना नहीं, अईमाना. ईमान, This is a different word, ठीक है? इसके अंदर भी फर्क मैं आपको बता देता हूँ. ईमान versus अईमान. ईमान versus अईमान. Iman is your belief. Okay? Ayman is a broken plural meaning oaths, promises. ठीक है? देखने में वैसे ही लगता है. ठीक? So this is aymana. जी, तो हमें मिल गया aymanahum. So what do we know about this aymanahum? It's a fail. No, attached pronoun. What is this structure? Idafa. It's an idafa, clearly. Very good. And what should I label it from the jumla fi'liya standpoint? ईमान नाम नसब It's A. Oh, sorry. Jumla failure. It should be. हम जुमला फेलिया में ना, और जी, हम sorry. जब जुमला नसब फेलिया स्टार्ट. जी नसब. सॉरी, ईमान इट्स नसब नसब. ऐमाना इज एन नसब, करेक्ट. तो मफूल हो गया. तो मफूल हो जाएगा. Maful. Yeah. बिल्कुल. 3. जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इदाफा, आपने स्टेटस ऑफ इसम पढ़ा है, राइट? Status of idafa आपसे पूछा जाए. Now this is entire one bucket and it has to be maf'ul. So the status of idafa is defined by the mudaf. Okay? What is the type of idafa? The type of idafa is defined by mudaf. It's proper. Okay? So now you look at this mudaf and because of this you will put this entire bucket in a maf'ul bracket. ठीक है?
क्लियर यहाँ तक? जी। आगे बढ़ते हैं, क्या नजर आया? जुन्नतन। जुन्नतन. Jun- What type of word is junnatan? Female. Ism. Oh, it's Ism. yeah. It's इसम an ism. It is female, yes. It's a That's true. female. Is it the best one? जी, sorry? नहीं sorry. ठीक तामरबूता। तामरबूता है. Tamarputa. What gives it away that it's an ism? How do we know it's an ism? We don't know the meaning. Without meaning, Daki पूछ रहा हूँ. Without meaning, how do we know that this is an ism? Train जो डबल एंड में एंडिंग है जो sound ending जी. sound की. First, the tanween gives it away clearly. Tanween it does not come on a fail except in one case, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो fail पे आपको नजर आएगी. It's if I think 1 or 2 times in the Quran there is a very exceptional scenario जहाँ पे fail के ऊपर तनवीन आती है. But 99.9% it's ism. ठीक है? So that gives it away. Plus the ta marbuta itself doesn't come on fail. Okay? It comes on ism. Now Junnatan is shield. Shield. ठीक है? Now this is another ism in nasab, and we are in a context of jumla failure, right? And we have already found a maf'ul, and there is another ism that is nasab. What do you think we should label it? 3. 3. 3. So this one aymanahum is 3a, junnatan is 3b. You can have as many maf'uls. Okay? अब आपको पता है इत्तखज़ू का मतलब to take, ayman का मतलब oaths, junnatan का मतलब shield. Help me translate this. They take. They took. they took They took their Their oaths oaths. their oaths Shield. as shields. Okay. as shield. सेंस बना रहा हूँ ना. ओ भाभी वो एयरपोर्ट वाली अंग्रेजी थी. हाँ. ठीक है. Sense ये जो बना as है ना, इसका नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. as shield. अब ये जो as अब इसको मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ. अब मैं आपसे कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ही इज बेटर देन मी, right? He's better than me. Now the question comes, in what? Right? Fine, he's better than you, but I'm sure you are better than him too in some respect, right? He's better than me in cricket. Now, what happens here? This part, without this part, your sentence was still fine. You don't need this part as such from grammatical standpoint. But this part is needed to clarify a confusion and ambiguity in the sentence. Right? So this is a maf'ul that is specially used to clarify things. They took their oaths. Okay, fine. Like what? In what sense? इत्तखज़ू अयमानहुम, यहाँ तक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पास इस सेंस में कि you will always be ambiguous about that, right? Junnatan comes and clarifies this as shields. Although कि literal translation सिर्फ shield है, but this as would be required in English. उर्दू में भी आपको लगाना पड़ेगा, की तरह का लफ्ज लगाना पड़ेगा कि उन्होंने अपने ईमानों को शील्ड की तरह बना लिया. ठीक है. You will have to add additional words to include this clarification. इसको अरबिक में तमीज कहते हैं. तमीज नहीं है ये, वो बदतमीज वाला तमीज नहीं है.
इस तमयीज कहलाता है ये, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ मफऊल। सो यू राइट, दीज आर टू मफऊल्स इन वन जुमला फेलिया, 1 2 3 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये मीनिंग्स याद रहेंगी। वैसे तो ये पहली आयत तो आसान थी। जा तो आपको मेरे ख्याल पीएचडी हो चुके हैं जा के अंदर आप लोग, राइट। मुनाफिकून आपको पता है, राइट, एंड दे विल रिपीट इन कुरान अ लॉट, ठीक है। कालू आपको पता है, राइट। नशहदु आपको पता होना चाहिए। इन्ना का आपको पता होना चाहिए। रसूलुल्लाह इज गिवन ऑफ कोर्स। यालमु आपको पता होना चाहिए, राइट। बाकी वही है। यशहदु फिर वही है, आपको पता है। काजिबून इज द न्यू वर्ड दैट वी डिड, लायर्स, राइट। मुनाफिकीन is also, you know, ठीक है। This is all vocabulary, and for every word that you see here, kazibun, munafiqeen, you should be able to do kazibun, kaziban, kazibin, kazibani, kazibaini, kazibaini, kazibuna, kazibina, kazibina, kazibatun, kazibatan, kazibatin, kazibatani, kazibataini, kazibataini, kazibatun, kazibatin, kazibatin. If you know this word, you know 18 words. Okay. If you know this word, you know 14 words. Okay. So that's the principle. That's how we'll build vocabulary. ठीक है। अब इसी खुशी में इत्तखज़ू का चार्ट पढ़ना है हमने, ठीक है। सेलिब्रेट तो करें ना, हमने माशाल्लाह पहली 1.5 आयत तो कर ली है ना, ठीक है ना। तो कौन पहले सेलिब्रेट कर रहा है? एक बंदा चाहिए बस मुझे, सबसे नहीं पढ़वा रहा, ओके। एक से चाहिए मुझे। मिल के पढ़ लेते मैंने। हाँ, पहले 3 बता देता हूँ, फिर हाँ? बाकी कंटिन्यू कर लें। क्या कह रहे हैं? अगर पहले 3 मैं बता देता हूँ तो फिर बाकी इस तरह से कर लेते हैं कि पहले 3 चले लाइन बाय लाइन कर ले, नो प्रॉब्लम। सो पहले तखज़ा, तखज़ा, तखज़ू। जी, स्वीडन में ही रहते हैं पहले। इत्तखज़त, ओ अच्छा सॉरी, स्वीडन में से ओह अच्छा हाँ मैं ओ हाँ खज़त इत्तखज़तानी नो 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 नो, नो तानी। हाँ इत्तखज़ता हाँ और इत्तख आप पता है क्या करें, आप हुआ से ट्राई करें। जब आप फ्लो में आएंगी ना, आप बोल देंगे इसको। हुआ ही नहीं, इसका इत्तखज़ा, नहीं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबीना आप कर लो। नहीं, इत्तखज़ा, नहीं 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 इत्तखज़ा, नहीं नहीं, चीटिंग। अब तो मैं आपसे करवाऊंगा। नहीं 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 नहीं, इत्तखज़ा, इत्तखज़ा से स्टार्ट करें। चले, खज़ा इत्तखज़ा। खज़ा इत्तखज़ू इत्तखज़त इत्तखज़ता इत्तखज़त هم नसरना, असरना। اتخذنا इत्तखज़ना। वेरी गुड, कर लिया ना, जबरदस्त। ठीक है, इसको पक्का करेंगे। एक राउंड के बाद मैं दोबारा आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। सही है, चले जी, रेडिंग चलते हैं। इत्तखज़ना के बाद इत्तखज़ा, इत्तखज़ा, इत्तखज़ू, इत्तखज़त, इत्तखज़ता, इत्तखज़ना, इत्तखज़तु, इत्तखज़ता, इत्तखज़ना, इत्तखज़ना। इत्तखज़ना, इत्तखज़ती, नहीं इत्तखज़तुम, नहीं, इत्तखज़ता, इत्तखज़तुमा, इत्तखज़तुम। गुड जी, बिलाल भाई। इत्तखज़ती, इत्तखज़तुमा, इत्तखज़तुन्ना। चले आखिरी 2 भी कहते, कोई बात नहीं। इत्तखज़ना, इत्तखज़तु, इत्तखज़ना। वेरी गुड, वेरी गुड। चार्ट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को 2 मिनट्स दे रहा हूँ, इत्तखज़ा को नेल डाउन करें। चले, सब नेल डाउन करेंगे इत्तखज़ा को, ठीक है। डंडे के जोर पे हुकूमत चलेगी।
अब मेरा ओके तो اتخذتو अभी होपफुली क्या हो जाएगा कुछ। होपफुली चले चले बिस्मिल्लाह। इस दफा सारे पढ़ेंगे एक दफा, ठीक है ना? चले स्टार्ट करें इंशाल्लाह। हु इज वॉलंटियरिंग फर्स्ट? चलें जी, मैं कर लेता हूँ। रेडिंग किया। इत्तखज़ा इत्तखज़ा इत्तखज़ू इत्तखज़ इत्तखज़त इत्तखज़ता इत्तखज़ना इत्तख اتخذت اتخذتما اتخذتم اتخذتي اتخذتما اتخذتن اتخذتو اتخذنا. वेरी गुड, वेरी गुड जी। रीडिंग में ही रहे। जी। चलो इत्तखज़ा इत्तखज़ा इत्तखज़ू इत्तखज़ता इत्तखज़त सॉरी इत्तखज़त इत्तखज़ता इत्तखज़ता इत्तखज़ना इत्तखज़ता इत्तखज़ता इत्तखज़त वर्सेस इत्तखज़ता, डिफरेंस है ना? जी। इत्तखज़ता इत्तखज़ता इत्तखज़ना इत्तख इत्तखज़ ठीक है। इत्तखज़ता इत्तखज़तुमा इत्तखज़तुन्ना इत्तखज़ती इत्तखज़तुमा इत्तखज़तुम सॉरी इत्तखज़ता इत्तखज़तुमा इत्तखज़तुम इत्तखज़ती इत्तखज़तुमा इत्तखज़तुन्ना इत्तखज़तू इत्तखज़ना। ठीक है। सॉरी चलें स्विंडन, टीम स्विंडन। اتخذا اتخذا اتخذوا اتخذت اتخذت नहीं, गलती हो गई। سوري اتخذت اتخذتا اتخذنا اتخذت اتخذتما اتخذتم اتخذتي اتخذتما اتخذتن اتخذتو اتخذنا. इत्तखज़ना, ठीक हो गया, जबरदस्त जी। जुनैद। اتخذا اتخذا اتخذوا اتخذت اتخذتا اتخذنا اتخذتا اتخذتما اتخذتم اتخذتي اتخذتما اتخذتن اتخذتو اتخذنا. जबरदस्त, ठीक हो गया। um just doing one experiment. खज कुरान में ये वर्ड 73 टाइम्स नजर आया मुझे 8 पेजेस के ऊपर, ठीक है? 73 टाइम्स in 73 ayahs आप देख सकते हैं। So once you start to memorize your vocabulary through a surah, it is only going to help you, ठीक है? रिपीटेशन बहुत ज्यादा है कुरान के अंदर, ठीक है? जब भी लोगों ने किताबें लिखी हुई है 80% ऑफ कुरानिक वोकैबुलरी याद कर लो तो समझ आ जाएगा, इस तरह की बातें इसलिए वहीं पे मौजूद हैं, ठीक है? सो लेट्स इंशाल्लाह फोकस ऑन दिस। यहां तक क्लियर है? जी यहाँ ठीक तक हो क्लियर गया, है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, उप्स, चलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फसद्दू, लेट्स सी इफ यू कैन
Tell me anything before I start telling you the answers. It's fail as well. 1, 2. It's fail, and we are saying there is 1, 2. Okay. How many words are these? leather Sadhu is Hmm. different. So the fail is saddu, not fa saddu. Okay. Fa is so, then, as a result. Okay. It's just a connector, right? So we know saddu is a fail, and saddu is a start of another jumla failure, right? So अब इसके ऊपर आ जाते हैं फसद्दू. Which pronoun is फसद्दू? सद्दू? Home. ठीक है जी. अगर जब हम इसको लेबल करेंगे, लेट्स से अगर मैंने इसको करा तो मैं पूरा फसद्दू को करूंगा 1 2, या मैं सिर्फ सद्दू को 1 2 होना सद्दू. सद्दू. फा वाज जस्ट अ कनेक्टर, विल जस्ट फर्स्ट अ कनेक्टर. बिल्कुल ठीक है. जुमला फेलियर से ताल्लुक नहीं है. फर कैन कम इन जुमला इस्मिया टू. ठीक है. सही. So saddu. Who can tell me the हुआ form of saddu? सद्दा. सद्दा. अब इस फेल के अंदर ना एक एबनॉर्मेलिटी है. To the. दाल. ठीक है. सद्दा. दिस इज अ फेल. आपने अभी तक जो फेल्स पढ़े, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा या, शीन और दाल के साथ आपने फेल पढ़ा यशहदु. सॉरी, या शीन और हा के उसके साथ, नॉट या, यानी शीन हा और दाल के साथ आपने पढ़ा शाहदा. ठीक है. अब इसके अंदर 3 डिफरेंट रूट लेटर्स थे इसके. सद्दा के अंदर क्या हुआ? इसके अंदर सौद, दाल एंड दाल, लास्ट 2 letters match the same. So when you make a fail out of it, like shahada, and you say sadda, so you end up like this, sadda. And because Arabs don't like this, they smoosh it together, make one one dal with a shadda, sadda. Okay. That's where this fail comes from. Now sadda means to turn away. To turn away. Now, it does not just mean to turn away. You turn away in a way that you take yourself away from something and the others around you. Okay? कि जैसे किसी से आपकी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए और आप अपने दोस्त को हाथ पकड़ के चलो यार चलते हैं बस यहाँ से, इनसे हमने क्या बात करनी है. ठीक है. So it's not just you going away, you also take whoever was with you, or whoever was not with you, you actually start to convince them to just go away from there. It's that turning away. तो इसको कुछ लिटरल सेंस में लोग they block themselves and others इस तरह भी ट्रांसलेट करते हैं, but this is too tedious of a translation. But this is very literal. They block themselves and others. The simpler translation is to turn away. But keep in mind, turning away in a way that you also motivate others to turn away with you. ठीक है. That's सद्दा. अब इस सद्दा के साथ थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी इसके चार्ट में आती है. हुआ सद्दा, हुमा सद्दा, हुम सद्दू. That's the word you see here. ठीक. So they turned away. It's a past tense. They turned away. Okay. Hiya saddat. हुमा सद्दता, हुन्ना. अब सदना मैं बना नहीं सकता इस तरह. You can't read this word. So what they do is they open up the dal here. Saddadna. When you reach the hunna, they open up the dal again. Sadadna.
Okay? And from this point on, the dal remains open up to the end. Anta sadatta, antuma sadattuma, antum sadattum, anti sadatti, antuma sadattuma, antunna sadattunna, ana sadattu, nahnu sadadna. So if you understand this abnormality up to hunna, you can do the full fair. Okay? So हुआ सद्दा, एक दफा मैं पढ़ता हूं आपके लिए. हुआ सद्दा, हुमा सद्दा, हुम सद्दू, हिया सद्दत, हुमा सद्दता, हुन्ना सद्ददना, अंता सददता, अंतुमा सदत्तुमा, अंतुम सदत्तुम, अंति सदत्ति, अंतुमा सदत्तुमा, अंतुन्ना सदत्तुन्ना, ana sadattu, nahnu sadadna. Okay, so that's the only abnormality. ठीक है, ये this is where the word comes from. That's for your vocabulary. To turn away. ठीक है, that's sadda. आगे बढ़ जाते हैं. हमें क्या नजर आया है यहाँ पे? हर्फ ऑफ जर. हर्फ ऑफ जर नजर आ गया. और जुमला फेलिया में हर्फ ऑफ जर नजर आए तो क्या होता है? MBF. MBF, right? मुताल्लिक बिल फेल. Right? So harf of jar कहाँ तक है? An and sabili. Right? An and sabili is a harf of jar fragment. And what about sabilillahi? We will take it Idafa. It's an idafa. Everything is chained Together. Yeah. together. So we can't disconnect them. So this entire bucket will be muta'alliq bil fail. Okay? So that is going to be your 4. This entire thing. An sabilillah का क्या मतलब है? away from the path of Allah. Away from the path of Allah. path So of Allah. let's translate this part. To turn away from the path of Allah. So they turn. Sorry. अच्छा, हमने पिछला वाली ट्रांसलेट नहीं किया ना. So let's translate the entire thing. इत्तखज़ू से लेके किया था? नहीं, ये किया हुआ है ना हमने. ठीक है, नहीं. किया हुआ, ये किया हुआ है. They took. So let's translate the entire thing. Okay. They took their oaths as shield. Okay. Now fasaddu an sabilillah. So they turn away. Turned away. So that and नहीं. अब फर की साथ सेंस क्या बनेगी? फर कैन बी सो, फर कैन बी देन, फर कैन बी एज अ रिजल्ट. Then Then they turn. They turned away from the path of no from So path. so की सेंस नहीं बनती. Then or as a result. If you look at grammarians जिन्होंने इसको एनालाइज किया हुआ है, they see this as a consequence, cause and effect relationship. Okay? Something happened and then as a result something happened. ठीक है. So आप जब grammatical analysis में जाएंगे, you will see a preference for as a result. Then is fine too, no problem. So I'll leave both here. ठीक है, ताकि आपको आपके ज़हन में रहे. ठीक है. So as a result or then आगे क्या लिखूं? सद्दू. They They Turned turn turned away 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 From the the from path the of path the of path Allah. of Allah. from the path of Allah. Okay. अब जो मैंने आपको सेकंड इसकी मीनिंग बताई थी, and others वाली, you could also say they turned away themselves and And not others. and others, Mhm. okay, from the path of Allah. Okay.
आप देखें इतनी सी अरेबिक की कितनी ज्यादा अंग्रेजी है. That's the richness of the language. ठीक है. um this part is complex. आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने भी नहीं पढ़ी हुई. मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ इसका. innahum, you should know what innahum is. ये This is a harf of nasr, mubtada, right? Sa'a, you should be able to detect what type of word this is. fail. Fail, present tense or past tense? Nasara. Nasara. Nasara, it's a past tense, right? It's like ja'a. उसमें भी Like बीच में that. alif था, right? Sa'a and ja'a. But this is a very special fail. This fail is used for amazement. There are few fails in Arabic. They are used for amazement. It is not used normally like any other fail. Okay? So, but इसका मतलब होता है, ये basically इसका मतलब है evil. आप ये समझ लें. How evil, how amazingly evil something is. You have to show that amazement. So this is your जुमला फ़ेलिया starting. मैं आपको इसकी complete depth नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि आप लोगों के लिए जरा ज्यादा हो जाएगा वो इस पॉइंट पे. ठीक है. मा is an ism mawsul which you have not learned yet. Yeah, Kanu is a fail that you have not Fail. learned yet. It's a naqis fail, incomplete fail. We still have to learn. Yeah. Ya'lamun, you should know. Ya'malun, sorry, you should know. What type of word this is? मुस्लिम जो मुस्लिमून. Nahi. नहीं, ये फेल है. Oh no, It's sorry, a, it's like मुंह से यंसुरूना से yeah. अल्लाह चाहता है. Yeah, it's a present tense. present. It's a present tense. Ya'maluna. आपने Yeah. पढ़ा है ये वाला फेल. Ya'lamuna. Yeah. इसमें लाम एंड फिर मीम. इसमें मीम एंड फिर लाम. Right? That's alam, that's amal. फर्क है, right? Ya'maluna is to do, to act, to do. ठीक है. So this is your jumla fi'liya. So I will ignore this point for you for now. मैं आपको इसकी मीनिंग जरूर दे दूंगा, but I will not explain much about this. ठीक है. This part की. This part translates to indeed how amazingly evil it is what they used to and then do. Okay? इस पार्ट को हम बाद में पढ़ेंगे. कुछ और चीजें कवर होना जरूरी है इसके लिए. ठीक है. So, but from a very basic standpoint, this is a jumla ismiya, and this entire thing is its khabar fi mahalli rafa. This one is again jumla ismiya. Sorry, jumla fi'liya, and this entire thing is the maf'ul for this jumla fi'liya. Now, this is again another jumla. अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा जो आपको कंफ्यूज करेगी. दिस इज नॉट जुमला फेलिया, ऑल्दो दिस वर्ड इज फेल. दिस इज जुमला इस्मिया. हम ये आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है. दिस इज ऑल्सो यालमूना इज ऑल्सो जुमला फेलिया इन इटसेल्फ. देयर इज लॉट्स गोइंग ऑन हियर. ठीक है. यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा. इंडीड हाउ अमेजिंगली evil is what they used to do. That's the translation of this entire part. ठीक है. Bear with me. अभी आपको इस लेवल पे इसको समझना चाहिए. ठीक है. सही. याद करने का होमवर्क नहीं लगाना चाह रहा मैं आपको, वरना मेरा दिल चाह रहा है मैं कहूँ ये 2 आयतें याद करके आनी है आपने.
होमवर्क आई नहीं थिंक लगाना यही चाह रहा, लेकिन बेटर हाँ वे है बात भाई। आप जब तक ये नहीं कहेंगे आई थिंक वी विल बी वेरी बिहाइंड। मैं फोर्स नहीं किसी को करता हूँ किसी भी इसमें। अगर आप कर लेंगे याद, you will feel very happy about it, क्योंकि now you've done some effort on these two, ठीक है, और इंशाल्लाह they should be easy. The best gift you can give to Allah is memorize something new and read in your salah, ठीक है, so try it. दो आयत है, आसान है, और ये बहुत छोटी सी सूरा है, it's just 11 ayahs in it, that's it, ठीक है। अभी तो निशानियां आना शुरू होनी है, उसमें मजा आएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल अभी हाँ जी। अच्छा, आपका होमवर्क क्या है? देखिए, मेमोराइजेशन इज समथिंग ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, आई विल गिव यू टू मेमोराइज देम। आपका होमवर्क है, जितना भी इसको कर सकते हैं आप, ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिअ अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ्क़हून। जो लफ्ज आपको नहीं पता, सुम्मा इज अ कनेक्टर, ओके इट मींस देन। एक फा देन होता है, एक सुम्मा देन होता है। सुम्मा इज मोर डिस्टेंट इन टाइम, ठीक है। If I study medicine, I will become a consultant. Now, this effect after the then is long term, years after. Okay? If I eat my breakfast, then I won't be hungry. That is an immediate effect. That is the fa. जब सुम्मा यूज होता है तो टाइम डिफरेंस काफी होता है उसमें। तो ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, यू शुड नो दिस वर्ड आमनू, यू शुड नो दिस वर्ड कफरू, ठीक है। You should know zalika, you should know biannahum. Fatubi'a. This is a fa is a connector यहाँ पे, summa is a connector यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है to be इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मीनिंग है, sealed was placed, ओके a ऑन द sealed was placed, ठीक है। अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ्क़हून, everything यफ्क़हून is to understand, okay। So जब आप इसको करके आएंगे, फतू भी आ का पूरा चार्ट आपको आता होगा, राइट। यफ्क़हून का पूरा चार्ट आपको आता होगा, ठीक है ना। फ्रूट चार्ट बनाएंगे क्लास में मिलके सब, ठीक है। ट्राई योर बेस्ट, आप खुद अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। यू विल पेस अप योर स्टडीज एंड यू विल पेस अप योर कॉम्पिटेंस इन द लैंग्वेज इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम ओके जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।